So first I am explaining this MATLAB code. In this CLC clear all, close all will clear all the previous windows opened and all the data in the history. So load UMA.mat. Now this UMA is just a metro analysis for urban station, and .mat is the format for the database. So it is loaded from UMA.mat to A. Now A is the matrix created in the workspace after this load command. Now S is the serial. So I am creating an object named as serial with current port. Now this COM port can change according to your connection, but they are one set, they are fixed. Now we are choosing a baud rate of 19200, which is a XB standard communication, as I explained on a hardware. So 19200 is our selection. Then I am opening this created object S. So F1S will open the object. Now it is actually scanning for number I. So fscanf will scan the number I. Then I am converting the string received to number, so that J is the actual number and not the string received. Now next is B equal to A comma, that is second is the billing of the user, that's why 2, and J is the user number. So if I receive 2, that means the second user, and so on. तो आपका एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें आपका फर्स्ट यूजर, सेकंड यूजर, थर्ड यूजर, फोर्थ यूजर लगा हुआ है, और उसी के नीचे उसका बैलेंस 1, बैलेंस 2, बैलेंस 3, बैलेंस 4 एक्सेट्रा है, एंड एनी क्वेरीज सच एज टिकट नॉट परचेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बेसिकली वी आर चूजिंग द बैलेंस, दैट्स व्हाई नंबर 2, एंड विच यूजर दैट फ्रॉम J. तो आपके फर्स्ट में तो यूजर नंबर होंगे, सेकेंड में बैलेंस होगा, और उसमें से बैलेंस का jth कॉलम वी आर सिलेक्टिंग. सो रो कॉमा कॉलम, दैट्स व्हाई 2, J. कमिंग बैक टू द प्रोग्राम. नाउ वी विल अगेन स्कैन द ID. Now in the software of Arduino, it is linked, it is sending a ID of the ticket. तो आपका जो भी टिकट है उसका एक पर्टिकुलर ID वो सेंड करता है, जो ये आपका रेलवे स्टेशन वाला प्रोग्राम रिसीव करेगा. Now on the railway station we are attaching a module called Zigbee module, और ये एक Zigbee Explorer है. ये एक्सप्लोरर क्या करता है, इसका ब्रेकआउट बोर्ड सीरियल में कन्वर्ट करता है. तो इस पे एक FTDI चिप लगा हुआ है जो RS-2322 USB कन्वर्ट करता है, और ये USB आपका सीरियल USB पोर्ट में जाता है. कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, आफ्टर द सेकंड स्कैन अगेन आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू Z, which is again string to num, and I am comparing whether the last sent string and current sent string is same. So J equal to Z. If that is true, that means I am just delaying it for a few seconds. It's hardly half second, but for that I am just writing a blank for loop going from 1 to 999999999, and it's ending. So tick tock will give me actual count for this, and it's just nothing but no operation performed between the. So basically when you are reading and writing, the computer works at very high speed. Currently my processor is Core 2 and its speed is 3 GHz, whereas my microcontroller works at low frequency, that is 16 MHz. So that is the difference we are facing. That's where this blank loop we have to insert, so that microcontroller can communicate in well time. Once we have shown the balance, so fprintf से जब आपने भेजा balance, then we are just sending the station name. तो उस वक्त तक वहाँ पे बैलेंस डिस्प्ले होता रहेगा, और जब वो उसका वापस स्कैन लूप में जाएगा उस वक्त उसको ये थाने स्ट्रिंग रिसीव होगा, जिसकी वजह से आपके करंट डेस्टिनेशन पे थाने. नाउ ये प्रोग्राम हर एक स्टेशन के लिए अपना अपना होगा. तो अगर आपको यही प्रोग्राम मुलुंड स्टेशन पे रखना है तो आपको यहाँ थाने का मुलुंड करना होगा. सिमिलरली CST, दादर, भाईकला, जो भी स्टेशन है उसके लिए सिर्फ ये आपको नाम चेंज करना होता है करंट स्टेशन का. एंड देन अगेन आई एम रीडिंग फ्रॉम scanf I1 J1 while I1 equal to 9. So initially we are receiving 9 and converting it into string to num.
if J1 is 9, then basically what we are doing, see, this is the program. So total number of stations we know, we are scanning the current station whatever user has selected. तो अगर यूजर वहाँ पे मुलुंड प्रेस करता है तो वो एक स्टेशन दूर है थाने से. So we are just reducing that J1, that is 1 into 4 minus the current value of user account. तो यूजर अकाउंट में अगर 200 रुपये है और उसने थाने से मुलुंड स्टेशन का टिकट खरीदा तो 1 into 4 that is 4 rupees minus the 200 is the original balance. So new balance B equal to 196 rupees. तो ये आगे वाला स्कैन लूप है, ये आपका कौन सा स्टेशन सिलेक्ट हुआ वो चेक कर रहा है. और ये बीच में 9 जो भेजा है that is for synchronous. You can remove this क्योंकि कम्युनिकेशन में 9 आने के बाद स्टेशन नंबर आता है, इस तरह से मेंशन किया हुआ है. बट यू कैन एनी टाइम रिमूव दिस एंड जस्ट चेक व्हाट द नंबर यू आर रिसीविंग. देन फाइनली वी आर रीराइटिंग बैक द कमांड A2, J इक्वल टू B, मतलब आपका नया बैलेंस जो है वो A में राइट हो रहा है. एंड देन वी आर डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट F क्लोज, डिलीट एंड क्लियर एस. ये 3 लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये पूरा प्रोग्राम फॉर लूप में रन कर सको. If you are not deleting the object created, it will give an error at F open and your MATLAB program will stuck. Next is we are just writing back the updated balance to urban metro service.mat and the A matrix is written inside that uma.mat, and this is how. The rest of the coding is not important, it was just for testing. So this is our main code and we will continue with the Arduino code in the next video. Okay, मला सांग